वेलकम ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम गणिता प्रकाश चैप्टर 7 फ्रैक्शंस जो चैप्टर है आपका क्लास 6 गणिता प्रकाश उसके सम्स करने वाले हैं। फिगर इट आउट के क्वेश्चंस पेज 152 एंड पेज 158। पहले तो हम पेज 152 करेंगे और फिर पेज 158 में से जो सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट में देखिए एरिया, पेरीमीटर, प्राइम टाइम, लाइंस एंड एंगल्स, सारे टॉपिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें मैंने सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस सॉल्व करके रखा है। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3 guavas टुगेदर वे 1 kg, यानी कि 3 guavas, 3 guava यानी कि अमरूद, ओके, टुगेदर वे 1 kg इफ़ दे रफली ऑफ द सेम साइज। अभी ये वाली बात बताने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि सारे गुआवास का मोर और लेस सेम साइज है, इसीलिए ऑफ रफली ऑफ द सेम साइज मोर और लेस सेम वेट आएगा हर एक गुआवा का। ईच गुआवा विल रफली वे हाउ मेनी केजेस? ईच गुआवा का वेट कितना है, एक गुआवा का कितना वेट है? ओके, तो ईच गुआवा वेज, ओके, वेज कितना? टोटल वेट तो 1 kg है और उसमें 3 गुआवा है तो 1/3 kg। ओके, आप इसको चाहे तो ग्राम में भी लिख सकते हैं, अगर आपकी टीचर ने ग्राम में मांगा है तो इसको 1000 कर दीजिए बाई 3, तो 1000/3 यानी कि आप ऐसा डिवाइड कर लीजिए रफ वर्क में। 3 9 1, फिर 3 9 1, फिर 3 9 और 1। ओके, तो 333 9 एंड 1 और फिर तो मेरा जो आंसर आएगा ना 333 1/3 ग्राम ऐसा आ जाएगा। ओके, तो फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी टीचर ने कैसा आंसर मांगा है। अगर केजी से खुश है तो आप 1/3 kg लिख दीजिए, अगर ग्राम चाहिए उनको तो फिर आप इसको ऐसे लिखिए, या फिर 333.33 ग्राम ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, तो देखते हैं ये वाली क्वेश्चन। यहाँ होलसेल मर्चेंट बोला गया। होलसेल मर्चेंट का मतलब क्या है कि हम जिनसे खरीदते हैं ना, आसपास हमारे आजू बाजू जो दुकानें होती है, वो जो दुकानें होती है वो होती है रिटेल की, यानी कि हम जाते हैं और पूछते हैं कि हमें 500 ग्राम सामान दे दो, तो वो 500 भी देते हैं, 500 ग्राम्स देते हैं। लेकिन 1 kg मांगेंगे तो 1 kg भी देंगे। लेकिन होलसेलर जो होते हैं ना, उनके पास सामान का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है और वो ही रिटेलर तक सामान पहुँचाते हैं। ओके, होलसेलर जल्दी हम लोगों को, जो हम रेगुलर कस्टमर है, उनको जो कम सामान खरीदते हैं ना, उनको सामान नहीं बेचते। अब इस होलसेलर ने क्या किया है कि 1 kg राइस को 4 पैकेट्स में बांट दिया है। द वेट ऑफ ईच पैकेट इज डैश kg। ओके, एक पैकेट फिर कितने ग्राम्स का या फिर कितने केजी का, केजी में ही आंसर मांगा है। ओके, तो आप लिखिए वेट ऑफ ईच पैकेट, और सीधे हमें क्या करना है, 1 kg था, 1 kg हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो 1/4 kg, क्योंकि आंसर जो है ना वो kg में ही मांगा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, इसको हमें ग्राम्स में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन फिगर इट आउट से। ओके, 4 फ्रेंड्स, ये जो है ना पेज 152 का ये क्वेश्चन है। 4 friends ordered, third question of page 152. 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. तो 4 फ्रेंड्स है और ग्लास लिए कितने? 3। ओके, 4 नहीं लिए। ओके, शायद उनके पास पैसे कुछ कम थे। ओके, तो फिर 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. तो each one drank dash glass of sugarcane juice. एक ग्लास का व्हाट फ्रैक्शन? ओके, जैसे कि एक ग्लास इधर हुआ तो इतना हो गया हाफ फ्रैक्शन, मैंने इतना ही ड्रिंक किया तो ये हो गया 1/4, इधर हो गया हाफ,
ये हो गया 3/4। इस तरह एक ग्लास का भी, जैसे कि हमने केजी का फ्रैक्शन निकाला है, इस तरह एक ग्लास का भी हम फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। तो फिर ईच ड्रैंक, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं स्टेटमेंट्स ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि स्टेटमेंट्स में ना मार्क्स बहुत कम रहता है। ओके, स्टेटमेंट्स में मार्क्स बहुत कम रहता है, इसलिए स्टेटमेंट्स में टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा पेपर सॉल्व करने को होता है। ओके, ईच ड्रैंक इज इक्वल टू 3 ग्लासेस को अब 4 हिस्सों में बांट दीजिए, तो 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो फिर ईच ड्रैंक 3/4 ग्लास, यही है आंसर। द बिग फिश वेज हाफ के जी, ये जो है फोर्थ क्वेश्चन है पेज 152 का। द बिग फिश वेज हाफ के जी, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg, टुगेदर दे वे हाउ मच? सो टुगेदर दे वे, सिंपली एडिशन है यहाँ पे, सो फिर हाफ प्लस 1/4। अब हाफ प्लस 1/4 हम कैसे ऐड करें? एडिशन का, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका एलसीएम तो 4 होगा, हमें पता है, तो इसको स्ट्रेट लिख देते हैं 4 से। इसको हमें हाफ इंटू 2, जो भी नंबर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। इसलिए करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन, हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो फिर अगर हमें एलसीएम बनाने के लिए 2 इंटू 2 करना पड़ा है, तो फिर ऊपर भी आप हाफ ज़रूर लिखिए। तो दिस इज 4 एंड दिस इज 2। नाउ add them 4, 3/4. Okay, so 3/4 kg is the total weight of 3/4 kg is the total weight of all the fishes. 1.5, 3/4, 1.25, half, quarter, 2.5. What to do now? Okay, so we have to arrange them in from the smallest to the biggest. The question says we have to arrange them from the smallest to the biggest. I have 1.5, 3/4, 1.25, 1.25. First I'll write them like this: 3/4. 3/4 is a 3/4. What is a quarter? Quarter is this. See, quarter is 1/4. This much is a quarter. 1.5, okay, and half. I'm writing them all in fractions. Quarter is this, and 2.5. Okay, so now we can arrange them. Let's see, we'll arrange them in smallest to biggest. So smallest is half, no, smallest is 1/4, then comes half, then it is 3/4, then I have 3/4 also, then it is, do I have 1? I don't have 1. This done, this is done, then this is 1/4. Okay, that is 1.25, and then 1.5, and then 1.5, and then I have 2.5. Okay, so I have done smallest to biggest, I have arranged them. Now this is, figure it out, page 158, first question. So first they have written half, then like this, then 2 halves and 1 more half. Okay, so I'll put commas, and then they have done this much, and then they say do it for 2 more steps. So for 2 more steps, what I will do is, here it is 2.5, you can see. So this is half, 1, 1.5, 2, 2.5. Now I'll make it 3. Okay, 3 full. So this is 6 halves, and then one more step will be full 6, that is 6 halves, that is total 3.5. Okay, so the first question says do this table for half for 2 more steps, and I did it. Here if you want to write half plus half plus half plus half plus half plus half, okay, that makes it 3. Here it is 3.5. Okay, and how will you write it? Half plus half plus half plus half, that is for this, plus half plus half
plus half. Okay, so I have written 7 halves. Okay, now my next question says, can you create a similar table for 1/4? Similar table we want for 1/4. How to make a similar table? First, see, this is 1/4. You can also see a quarter. Okay, after that, see this. So this is 1/4. This is 1/4 plus 1/4. Now, see, how will I make it here, and I will erase this much. 1/4 plus 1/4 plus 1/4, right? And now 4 1/4s. 1/4 plus 1/4 plus 1/4. These are fractional units. These are called fractional units. Okay, now one more let me make. They have not told how many to make, but one more I will make. So this is 5. 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4. Okay, तो ये हो गया. This is I did the same table for 1/4. Now the next question says, make 1/3 using paper strip. Can you use this to make 1/6? Okay, very nice question. Make 1/3 using a paper strip. Okay, third question. Make 1/3 using, can you use this to make 1/6? So 1/3 to make a paper strip. This is a paper strip. 1/3 is this. Okay, can you use this? Yes, I can use it. This is my 1/6 now. See, okay, so each 1/3, if I divide it further, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, each one is a 1/6, 1/6, 1/6, like this. Okay, 1/6 and 1/6. Okay, now the fourth A part says 5 times 1/4 of a roti. 5 times 1/4 of a roti. Now maybe you are a very fussy eater, so you don't want to take full roti, and you are constantly being told to take, 1/4 more. So 5 times 1/4 of a roti, this is 4 times 1/4. Okay, this is 4 times 1/4, and this is the 5 times 1, 2, 3, 4 and 5 times you took 1/4 of a roti. You actually had 1 and 1/4. Okay, so you didn't understand also, but your mom actually fed you more than one roti. Okay, very cleverly. Now 6th one is 9 times 1/4 of a roti. So 9 times 1/4 of a roti. Now how to draw that? This is 4 times, another 4 times, yes, and one more time. This is 9 times 1/4 of a roti. So here you actually ate 2 and 1/4 rotis, isn't it? Okay, now match each fractional unit with the correct picture. Okay, match each fractional unit with the correct picture. Now इसमें जो 4 options, the 4 options that they have given us is 1/3 is written, 1/5, 1/8, 1/6, 1/5, 1/8 and 1/6. These are the 4 options that they have given. 1/3 clearly this is our 1/3 clearly. Okay, because they have shaded this much, so this is 1/3. Okay, here in this one they have shaded only one part, in this one also only one part is shaded, and in this one also one part. 1/8. Now if I count here, I will get 8 parts. So this is the 1/8, 1 out of 8 parts. This is 1/6 clearly, and this is 1/5. Okay. Okay, so this was Figure It Out, page number 152 and 158. I will come back with more videos of fractions chapter, fractional units of the chapter fractions, Ganita Prakash class 6. Okay, let me know how you are finding my videos. Please leave a comment, and also if you have not subscribed the channel by now, please don't forget to subscribe it. By then.